Varun Badola, the captain, looking pensive, but he knows that there is hope at the end of the tunnel. These two gentlemen, if they keep themselves planted on the field, it's their game. That's the key. Yes. Caught in the act. It's selfie time for fans in the stands. For the moment, change in bowling. It's Chandan who's coming on the ball. Well, a lot of excitement in the stadium, Raman. 60,000 is the capacity of this particular stadium, and the crowds know that their favorite stars are in a new avatar. They're in a new form, and it's just wonderful to see both the worlds coming together in this atmosphere, this electric atmosphere rather. You know, I was just remembering something, Vineet. The crowd are loving the action. Mumbai Heroes on song, Jay on 28, Shakib's on 28 as well. I remember Shakib, in fact, play in one of the movies that he acted in, actually essayed the role of the Indian cricket team's captain, who was a star batsman. For the moment, Karishma Tanna needn't look so worried because Shakib is batting like a star, albeit it's Jay on strike at the moment. Well, let me tell you that Karishma Tanna herself, she has been hosting a few shows on certain TV channels which show her love for cricket, and Aarti Chabadia all smiles knowing that their team is doing so well in the middle out there, and they are here to support them, here to soak in the magic of the crowd around them on this Christmas day. And Shakib and Jay, well, gentlemen, you've given this team, this innings, a new lease of life. As even as it gets, 12 deliveries faced, 28 scored by both the batsmen. You've got a little competition going amongst themselves. Let's call them even Stevens. Oh, that's another single. Oh, that could be two. Yes, they'll run off the misfield and get two as well. Achhi running between the wickets दोनों द्वारा. ऐसी गलतियां नहीं कर सकते हैं. ऐसी गलतियां इस मुकाम पर आकर मुझे लगता है कि पूरी टीम का मोरल डाउन कर सकती हैं. देखिए, नर्व्स का गेम है ये, और जिस तरीके से बुलडोजर्स ने अभी तक पारी को संभाला है, एक अच्छा स्कोर खड़ा किया है, उसको मिस फील्ड से और इन फंबल से खराब नहीं करना चाहिए. और ये बेहतरीन शॉट ऑफ साइड की तरफ, और ये बाउंड्री पार करेगा और टोटल को ले जाएगा 66 पर. मुंबई हीरोज को डगआउट, फिर से उछाल एक्साइटमेंट में, फिर से उछाल उम्मीदों में. रन आ रहे हैं, रन रेट 15.5 के आसपास. इस बार स्लॉट में बॉल, करारा प्रहार था ये जय भानुशाली का. दो बाउंड्री राइडर्स को बाइसेक्ट किया. देयर वाज अ डीप एक्स्ट्रा कवर and a fielder at long off. He's got it right between the two. This time it's skewed in the air. Will it be taken? No, it won't. I think he lost it in the lights with the fielder. Well, it was not a no man's land. It was definitely an effortless zone. It could have been a catch, but I guess, like Raman said, the light got into his eye. खुशकिस्मत रहे जय, अगर पकड़े जाते तो एकदम से डिप आ जाता इस गति में, इस फॉर्म में और इस चेज में. Look at the man who came in from deep extra cover. Lost it in the lights. Well, Chandan's a little disappointed. Spinner. Well, a lot of batting to come for the Mumbai Heroes. They need a wicket desperately. They need a breakthrough. Will he be the one? Well, he tried to hit it big, but again, the running between the wickets, Raman, has been sublime. I'll tell you what, Vineet, this is definitely match on. क्योंकि आप देखिए टारगेट क्या रह गया अब. केवल 57 रन यानी 57 रन 32 गेंदों में, आस्किंग रेट 10 के आसपास. क्या बैटिंग करी है शाकिब और जय ने. 10 विकेट हाथ में. अब ये गेम मुंबई हीरोज के हाथ में. यहां से अगर हारेंगे, ओ देखिए चोट लगी थी मनोज तिवारी को फील्डिंग करते हुए. और रन्स 22 मिलेंगे. ये 4 22 रन्स तो बह रहे हैं अभी. जी, रन्स बह रहे हैं, और मनोज तिवारी दूसरी पारी में अपना जलवा नहीं बिखेर पाएंगे. उंगली में चोट लगी है उन्हें, और मुंबई का डगआउट कप्तान वरुण बडोला समेत आरती चबड़िया और करिश्मा तन्ना वहां पर मुस्कुराते हुए और जानते हुए कि क्या कमाल की इनिंग्स चल रही है.
खींचा के लिए मुश्किल थी यहाँ पर वत्सल खुश है, मुंबई हीरोज का कैंप खुश है, क्यों ना हो। और ये आखिरी गेंद 5वें ओवर की। स्विच हिट की कोशिश पर एक सिंगल ही मिलेगा। 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद 73 फॉर नो आउट।